Well, in this module, we will learn few terminologies that we commonly use while preparing statement of financial position. And these are the terminologies which are important to understand the financial status of the entity as well. These include net assets, net current assets, and capital employed. Well, mostly people they get confused in these first two terminologies, net assets and net current assets. All right. So your attentions would be required. नेट एसेट्स जैसा कि इसके नाम से ये चीज जाहिर है कि वी आर सब्ट्रैक्टिंग टोटल लायबिलिटीज फ्रॉम द टोटल एसेट्स. All right, we know very well that in a statement of financial position means a balance sheet, we present total assets and then we present owner's equity and liabilities in it. Total assets are always equal to owner's equity and the liabilities. Well, what we will be doing, pick up liabilities, total liabilities from the other side and take it to the left hand side in a way if you are having an equation with you. So आप जब उसको total assets में से minus करेंगे उन total liabilities को, तो you will get net assets, simply assets minus liabilities. The important point to note over here is these net assets are in fact owner's equity of the entity, and these are interchangeably used. These terminologies, either we call it as owner's equity or we may also call it as net assets. So wherever you will find the terminology net assets, it means owner's equity of the entity. Got the point? Well, the next point is net current assets. Look, here we are using the word current in between the net and asset. So, net current asset means that we are subtracting current liabilities from the current assets. Well, current assets, we know very well that when we are preparing balance sheet, the assets are broadly categorized into non-current and current assets. Okay, the total assets हैं non-current and current assets. उसमें से उस current assets को आप pick करें. And we, by the way, have already learned that what are the current assets. There are a few criteria that we have already learned in our earlier discussion for IS1. तो current assets आपने identify किए, उनको total कर लीजिए. उसमें से आप लेस करेंगे करंट लायबिलिटीज. अगेन करंट लायबिलिटीज को भी हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया हुआ. तो करंट लायबिलिटीज व्हेन वी विल बी सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द करंट एसेट्स we'll get net current assets. This net current asset is in fact working capital of the entity. Okay, so net assets जहां कहीं आप लिखा हुआ देखें it means owner's equity, and net current assets अगर आपको कहीं पर नजर आए तो इट मींस वर्किंग कैपिटल. बाय द वे, अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी इस तरह से एग्जामिनर आपको बाजुकात टेस्ट कर रहा होता है डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज करके. यू शुड बी वेरी मच क्लियर ऑन दिस टर्मिनोलॉजीज. कैपिटल एम्प्लॉयड. वेल, capital employed, in fact, the resources that we have put into the entity, जो कि हमने डिफरेंट सोर्सेस से हासिल किए हुए होते हैं, उसको कैपिटल एम्प्लॉयड कह रहे हैं. अब यहां पर हम मेन सोर्सेस देखते हैं, दो हैं. ऑनर्स एक्विटी विच वी गेट फ्रॉम द ऑनर्स, एंड डेट्स जो कि आपकी बोरोड इक्विटी होती है, जो लेंडर्स से हमने लोन के तौर पर लिए हुए होते हैं. तो इसको हम यूं कह सकते हैं कि ऑनर्स इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी इज द कैपिटल एम्प्लॉयड. अब इस कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन जो मैं कह रहा हूं उसको आप साथ साथ अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा प्लीज.
टोटल एसेट्स जो कि आपकी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पर थे, और इक्वेशन की राइट हैंड साइड पर ऑनर्स इक्विटी एंड लायबिलिटीज हैं। अब उन टोटल लायबिलिटीज में से आप सिर्फ करंट लायबिलिटीज को पिक करें और वहां पर टोटल एसेट्स में से माइनस कर दें। बाकी आपकी इक्वेशन की राइट हैंड साइड पर क्या रह गया? ऑनर्स इक्विटी एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। तो क्या इसका फॉर्मूला क्या बना? अब दोनों साइड्स पे आपको इसके फॉर्मूला मिलेंगे क्योंकि बोथ साइड्स आर ऑलवेज इक्वल ना। आपको लेफ्ट हैंड साइड पर इसका फॉर्मूला क्या मिल रहा है कि टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज कैपिटल एम्प्लॉयड। राइट हैंड साइड पर क्या फॉर्मूला मिल रहा है? ऑनर्स इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। अच्छा, अभी हमने एक चीज डिस्कस की कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। अब लेफ्ट हैंड साइड पर जो आपके पास टोटल एसेट्स हैं उनमें दो तरह के एसेट्स हैं, एक नॉन करंट एसेट और एक करंट एसेट, और वहीं पर करंट लायबिलिटी भी आप ले गए। अब करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को लेस किया तो वर्किंग कैपिटल आया। फॉर्मूला क्या बन गया? नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब देख रहे हैं देयर आर थ्री फॉर्मूले दैट वी कैन यूज टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। एक, टोटल एसेट्स लेस करंट लायबिलिटीज। सेकंड वन, non-current assets plus working capital, and the third one is owner's equity plus non-current liabilities. As I have already told you, these are the terminologies important for you as an examinee, as well as these are the terminologies which are important for the users of financial statements who want to understand what is written in these financial statements. So your attentions to understand all these terminologies is very much required.